Assalamu alaikum, my dear students of 7th standard. Hope you're all fine. If you remember, in the last lecture, we discussed plant tissues. I told you that in totality, plant tissues ought to be studied in two categories, that's meristematic tissues and permanent tissues, right? So, meristematic tissues, में मैंने बोला, they're also called meristems and they're formed of cells, meristematic cells. वो cells living होती है और वो इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन होती है, कंटिन्यूसली वो डिवाइडिंग स्टेट में होती है। दैट्स नॉट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। जब मरिस्टमैटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, उनकी फिर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। तो वो एक स्टेज पे पहुंचती है जहाँ पे उनको असॉर्ट की जाती है कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस लाइक कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है आफ्टर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड रीचिंग ए पर्टिकुलर स्टेज, आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर ग्रोथ, they are assorted some specialized functions to carry out, like as I told you, protection, mechanical strength and conduction of water and minerals. वो सेल्स जो होती है फिर वो स्टॉप हो जाती है, दे आर नॉट इन अ डिवाइडिंग स्टेट, वो फिर डिवाइड नहीं हो जाती, वही सेल्स परमानेंट टिश्यूज़ बनाती है, ठीक है ना। सो परमानेंट टिश्यूज़ और मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन। इनमें हम बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ पढ़ेंगे, कुछ का फंक्शन है कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फूड एक्स्ट्रा। कुछ का फंक्शन है to provide support and protection to plant body. Here we have categorized the permanent tissues into two types depending upon whether they are formed of same type of cell or two types of cell. So it's simple permanent tissue and complex permanent tissue. So permanent tissues are categorized into two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is made up of only one type of cell. They are structurally and functionally similar. एक ही किस्म की सेल के बने हुए होते हैं simple permanent tissues. Well, that's not the case with complex permanent tissue. They are made up of two types of specialized cells. They also perform the similar function, right? यहाँ पे cells दो types की होती है, यहाँ पे एक type की होती है. So now talking of simple permanent tissue, it's categorized into two types depending upon their functions like protective tissue and supporting tissue. Protective tissue, it provides protection to plant body. जैसे हमारी बॉडी में स्किन एक कवरिंग होती है that covers each and every part of our body, वैसे ही प्लांट बॉडी में एक कवरिंग होती है एपिडर्मिस की. इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड सेल लाइनिंग एंड वी हैव टू डिस्कस एपिडर्मिस इन प्रोटेक्टिव टिश्यू. सपोर्टिंग टिश्यू में हमको ये तीन टिश्यूज़ डिस्कस करने हैं. दीज प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट बॉडी, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, right? And complex permanent tissue, as I told you, they are formed of two types of cells and specialized cells which perform a particular function. इसमें हमको xylem and phloem discuss करना है. They are complex permanent tissues, right? So in future lectures we are taking these tissues one by one and we will discuss these tissues in detail. Today I provided you the schematic representation of permanent tissues in total. टोटल में हमको कितने permanent tissues है, कैसे हमने इनको डिवाइड किया है, कौन सा क्राइटेरिया लिया है, तो कितने टाइप्स के टिश्यूज़ है. Tomorrow inshallah we will take up protective tissue, that's epidermis. So thank you.